about the recent advancement in the field of physiotherapy and rehabilitation. Yeah, right. Okay, So sir. we'll basically discuss about the advanced techniques used in the field of physiotherapy, or basically in orthopedic physiotherapy field. Let us discuss about this thing. I'm going to share you. Hello. Yes, sir. Do you are you able to see the screen? Yes, sir. We can see Is this. it visible? Is it Sir, visible to you? if the font size could be increased, it is Okay. visible, but the It is. size is very small. So if the screen can be zoomed, sir. I don't know how to increase the सर size. नीचे जो आपको यहाँ पे 100% दिख रहा है ना, इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए. Let me check it. आपके स्क्रीन पे नीचे, Yes, हाँ yes, yes, हाँ yes. हाँ, इसको 100% को सर थोड़ा सा बढ़ा लीजिए तो दिख जाएगा. Is it okay? Yes, sir. Now it's fine. Right. Okay. Basically, in orthopedic physiotherapy, as per your syllabus, we will go through the uh, advanced techniques what we use in orthopedic physiotherapy. The first technique is Syriac's method of orthopedic medicine. Actually, Syriac was the he is known as the father of orthopedic medicine, and he has contributed his principle in orthopedic medicine for the assessment and treatment of orthopedic conditions. Patients those are suffering with pain and stiffness and musculoskeletal problems. So he basically coined three basic principles. The first is known as, according to his thought, every pain has a source. Means wherever or whenever pain is arising in the body, it has some source, and clinician has to recognize that source of the pain.
Second principle was treatment must reach the source. इनका कहना था कि आप whatever treatment you are providing to the patient for the alleviating of pain, that treatment must reach to the source of the pain, means the root level, at the root level. And third, treatment must benefit the source in order to relieve the pain. Means if you are applying some treatment and it is reaching to the source and at the at the root level of the cause of the problem, your treatment must be effective so that it can benefit in relieving the pain. Most source of pain in musculoskeletal system can be localized to a specific tissue, and you should must examine carefully in a systematic manner to isolate the cause of pain and then treat it specifically. A specific diagnosis leads to successful treatment. Basically, his assessment and treatment was based on the first proper examination, means diagnosis. The pillar of his system are understanding the referred pain. The diagnosis will often turn on the assessment of site and nature of pain and the manner in which it projected and elicited in the serious concept. Referred pain obeys certain rules. Examination by selective tissue tension tests. Syriacs had three principles for examination of selective tissue tension. First was the isometric contraction test for testing the function of contractile tissue. According to his thought, if contractile tissue has some like injury, that can be tested with the help of isometric contraction. Means, suppose one person is suffering with bicipital tendinitis problem. If you will tell patient to flex the elbow against the resistance, if patient will attempt to flex the elbow against the resistance, he will feel pain. And as per Syriac's concept, the isometric contraction tests the function of contractile tissue, and the contractile tissue are the muscles associated with their tendons, muscles with tendon, nerve and bony insertion. Actually, जहाँ पे भी मसल्स की ओरिजिनल इंसर्शन होती है, तो अगर हम रेसिस्टेंस ट्रेनिंग देते हैं तो क्या होता है, whether the muscle is inserted over the bone, over the periosteum, that attachment part create more and more tension over the tendino-osseous junction, and because of that tension, pain arises, and that arising of pain indicates there is injury within the tendon. Second is passive movement test. Passive movement test the function of inert structures. Inert means joint capsule, ligaments and bursa. तो जब भी पेशेंट में अगर जॉइंट कैप्सूल्स की इंजरी है, लिगामेंटस इंजरी है, बर्सा की इंजरी है, तो हम इसको पैसिव मोमेंट टेस्ट करते हैं. और पैसिव मोमेंट टेस्ट ही स्ट्रेस टेस्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस टेस्ट जो करते हैं. इट इज फॉर द to confirm the to assess the function of the inert structure like joint capsules, ligament and bursa. तो जब कैप्सूल के स्टिचिंग करेंगे तो पेशेंट को पेन होगा in a certain pattern of the joint pattern movement. Ligament में again in case of the stress test patient will complain pain. And again bursa की इंजरी, जब bursitis हो जाती है, again bursitis में भी पैसिव मोमेंट टेस्ट होता है. पैसिव मोमेंट टेस्ट में बेसिकली क्या है कि हम लोग जो ओवरहेड मूवमेंट करते हैं, पेशेंट का कराते हैं सडन मूवमेंट, उसमें पेन फील होता है, तो दैट इंडिकेट्स देयर इज इंजरी ऑफ द बर्सा, लुब्रिकेशन मैकेनिज्म इंजरी.
And third is capsular pattern differentiate between joint condition and other inner structural lesions. Actually, do you know what is capsular pattern? Capsular pattern क्या होता है? Capsular pattern denotes the inflammation of the capsule, such as inflammatory or traumatic arthritis. Capsular pattern क्या होता है? See, every joint has certain movement pattern, and that movement pattern is basically uh, occurs because of the certain arrangement of the capsules. Suppose करो joint shoulder joint में there are three arrangement of the capsule: posterior capsule, anterior capsule, and inferior capsules. When you do flexion, the head of the humerus goes posteriorly, and there is posterior glide occurs. तो posterior glide में क्या होता है कि जब फ्लेक्शन करता है तो हेड ऑफ ह्यूमरस पोस्टेरियर जाता है, फिर एबडक्शन में इंफेरियर जाता है, और जब रोटेशन करते हैं एक्स्ट्रा रोटेशन तो एंटेरियर जाता है, तो हेड ऑफ ह्यूमरस। और इसी कैप्सूल में जो टाइटनेस हो जाती है, शॉर्टनिंग हो जाती है, एडेशन बिकॉज ऑफ एडेशन, तो जिसको एडेसिव कैप्सुलाइटिस बोलते हैं। शोल्डर जॉइंट में बेसिकली फ्रोजन शोल्डर केस में ऐसा पाया जाता है कि व्हेन वी टेल पेशेंट to do flexion, abduction, adduction, and rotation movement, patient will not be able to perform the full movement, and this is because of the capsular tightness. फिर इसका ट्रीटमेंट पार्ट में क्या है? ट्रीटमेंट टेक्निक यूज इन ऑर्थोपेडिक मेडिसिन डिपेंड्स entirely on the type of disorders. The different types of treatment we describe are manipulation therapy. Manipulation technique: rapid small amplitude thrust, passive movement are used to reduce a small cartilaginous displaced fragment both in the spine and in the peripheral joints. That is also known as loose bodies. Manipulation is also called for to restore normal mobility in a joint restricted by ligamentous adhesions and in subluxation of the bones. So the manipulation techniques was the treatment technique, and this technique was developed by the Syriacs, and by this technique we achieve movement within the joints where the loose bodies are formed. And this type of manipulation we also use in manipulation under anesthesia. Surgeons do this type of manipulation, and we also do give manipulation in case of chronic joint pain. A small amplitude high velocity thrust. Passive mobilization are used to stretch capsular adhesions and to improve the function of ligament and tendons. See, ligament and tendons are the tendons are the contractile tissue, and because of the shortening in the tendon, there is a chance of decrease in movement. There is a chance of stiffness in the joints, and also because of the adhesion within the capsule, there is joint stiffness occurs, and both things are corrected with the help of passive mobilization. Active movements and proprioceptive training are needed in the treatment of functional disorders and instability. In the treatment of minor muscle tear, they are very useful in avoiding the formation of abnormal intra-lesion adhesions formation. Basically, because of the repeated active movements and proprioceptive training, there is a strengthening occurs in the muscles, and because of the strengthening,
the joint become more stable. Injection and infiltration technique means intraarticular injection. It was also developed by the Syriacs, and this type of treatment is valuable in case of arthritis, bursitis, ligamentous and tendinous lesion. Deep friction massage. You provide deep friction massage in case of chronic soft tissue injury problem, such as it is very effective in case of lateral epicondylitis. So this deep friction massage is very useful technique in treating traumatic and overuse soft tissue lesions. The rationale for using deep friction, which is in fact a form of soft tissue mobilization, is supported by experimental studies of past several decades that confirms and explains the beneficial effect of activity on the healing musculoskeletal tissue. Actually, when we provide deep friction massage, what it does, it it will basically break the adhesions, and it increase the conditioning of the deconditioned soft tissue structures, and it also improve the circulation, and after that the soft tissue become more elastic and basically conditioning improved. So this is very brief about the Seriax technique. In the same form, the Kelton bond technique, then metal mobilization technique, then Mulligan mobilization techniques we use in orthopedic physiotherapy for the estimate of joint range of motion and improvement in the joint function, and also help in relieving joint stiffness. According to Kelton bond, the restoration of joint movement based on the surface shape, concave convex shape phenomena. Kelton bond traction grading scale. Actually, Kelton bond is the traction technique, and it has three grades: grade 1, grade 2, and grade 3. Grade 1 is neutralizes joint pressure without separation of joint surfaces. It's a very mild form of traction we provide over the limb, so that the it's neutralizes the joint pressure and there is no separation of the joint surface. But in grade 2, we separate articulating surfaces, taking up slack or eliminating play within the joint capsule. In grade 3, we provide a stretching of the soft tissue surrounding joints. Kelton-Bond technique is based on the concave convex principle. Means, suppose in case of the shoulder joint, we are going to apply the Kelton-Bond technique. Concave is the glenoid cavity, and convex is the head of the humerus. And again, we provide distraction force at the proximal part of the humerus in different grades. Next is Maitland technique. Maitland technique is the mobilization technique. It is again the passive mobilization techniques we apply over the joint. A thorough assessment including not only the joint range but also the moment quality is the key
for Medline practitioners. Means before applying this technique, we should assess the joint and we should diagnose the condition, whether the condition is acute, subacute, or chronic, and whether the patient is having only pain or patient has pain and stiffness both, whether the associated muscles around the joints have a spasm, and after assessing properly the condition, we provide Medline technique. Medline has 4 grades: grade 1, grade 2, grade 3, and grade 4. Grade 1 and grade 2 is basically we provide for, for the management of pain and spasm. Grade 3 and grade 3 is used for grade 3 and grade 3 is used for achieving range of motion. Grade 1st is defined as a small amplitude movement at the beginning of the range of movement used to manage pain and spasm. A small amplitude movement at the beginning of the range of movement. This is grade 1. Grade 2 is large amplitude movement within the mid range of the movement. Utilizes when quick oscillation induces spasm or when slowly increasing pain, restrict movement halfway into the range. Means mid range तक अगर movement restricted and there is pain. We opt grade 2. Grade 3 is large amplitude movement up to the point of limitation in the range of movement. Used when pain and restriction from spasm, inert tissue tension or tissue compression limit movement near the end of the range. That is known as grade 3. Grade 4 is a small amplitude movement at very end of the range. Used when resistance limits movement in absence of pain. पेन नहीं होता है बट स्टिफनेस एंड रेंज पे है. We should use the grade 4, a small amplitude movement at the end of the range. End range mobilization technique is basically very helpful in the case of the frozen shoulder. When we treat patients of frozen shoulder, what we basically observe, patient is able to do movement even more than half range of movement, and the end range restricted. In that case, we apply grade 4 Medline mobilization technique. Next technique is Mulligan technique. Mulligan technique is basically based on the idea is that the therapist should provide a sustained parallel or perpendicular glide to a joint to the end of the range, pain-free, to increase the overall range of movement. Or basically, there are 2 types of movement considered by the concept. First is snag movement, and second is NWM. Snag is known as sustained natural epiphyseal glides, or basically snag we provide in case of vertebral mobilization, spine mobilization. It is very effective in cervical spondylitis
Also in chronic prolapsed intervertebral disc conditions. And mobilization in movement is a passive accessory movement with active or passive physiological movement at the joint. Means in case of MWM, we provide mobilization and simultaneously patient is asked to do active movement. This is known as MWM. MWM technique we apply in peripheral joints like in shoulder joint, in knee joints, where the movement is restricted and it provides orthokinematics in movement in the joint and simultaneously the strength has to do active movements. This form of treatment technique is known as Mulligan technique. Mechanic technique is also popular technique, and we also provide in case of the disc herniation or in case of the spinal problem. Mechanic technique is basically based on the uh, how to correct the biomechanical dearrangement in a rearrangement, and when the pain is peripheral, we basically try to centralize the pain. So suppose in case of PIVD sciatica, patient feel pain over the low back area and again over the gluteal area, back of the thigh and is the calf. So here McKenzie concept, McKenzie by using McKenzie technique, we basically reduce the firstly peripheral pain, and this peripheral pain gradually go towards the center of the pain, center of the area where the pain arises, and after that we focus on the relieving of the centralized pain. और बेसिकली मैकेनिक टेक्निक को हाइपर एक्सटेंशन स्पाइन इसके पोस्टर्स कई हैं स्पाइन के पोस्टर्स और हाइपर एक्सटेंशन टेक्निक को कहा जाता है बट इट हैज सम अदर फ्लेक्शन postures also. Again, PNF technique is very popular technique both in orthopedic physiotherapy and neurophysiotherapy field. We use this technique. It is known as proprioceptive neuromuscular facilitation. We use proprioceptive input to improve muscle flexibility and strength. इसे basically इससे मसल्स की हम स्ट्रेचिबिलिटी इंप्रूव करते हैं और स्ट्रेंथ भी इससे मिलता है इंप्रूव होता है इट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल ह्यूमन एनाटॉमी एंड न्यूरोफिजियोलॉजी इट यूजेस प्रोप्रियोसेप्टिव cutaneous and auditory input technique have long been recommended for increasing strength flexibility and range of motion. Basic principle of PNF must be taught. The patient must be taught the PNF patterns regarding the sequential movement from starting position to the terminal position. इसमें क्या होता है मोमेंट पैटर्न D1 D2 पैटर्न हम पेशेंट को बताते हैं और इस पैटर्न के थ्रू क्या होता है कि पेशेंट्स achieve the strength over the weaker section of the muscles. Those are helpful in doing certain movement. फिर इसमें क्या करते हैं हम verbal cues we provide push and pull technique ask for isotonic contraction hold we ask for isometric stabilizing contraction and we also ask for relaxation
Manual contact with appropriate pressure is essential for influencing direction of the motion and facilitating maximal response. Proper mechanics and body positioning of the athletes are essential in applying pressure and resistance. Amount of resistance also matters for achieving good results. A specific joint may be facilitated by traction or approximation. Giving a quick stretch to the muscle before muscle contraction. These are the few principles. These techniques may be used in imitation program either to strengthen or facilitate a particular agonistic muscle group or to stretch or inhibit the antagonistic group. बेसिकली ये दो तरह की टेक्निक होती है। एक में क्या होता है, स्ट्रेंथनिंग करते हैं, एंड स्ट्रेंथनिंग बेसिकली फैसिलिटेट्स ए पार्टिकुलर एगोनिस्टिक मसल ग्रुप, और स्ट्रेचिंग देते हैं और टू इनिवेट द एंटागोनिस्टिक ग्रुप। स्ट्रेंथनिंग टेक्निक में स्लो रिवर्सल है, स्लो रिवर्सल होल्ड, रिदमिक स्टेबलाइजेशन, दीज आर द टेक्निक वी बेसिकली यूज। Then hold, relax, contract, relax, rhythmic stabilization. An isometric contraction of agonist followed by the isometric contraction of the antagonist. It produces co-contraction and stability of the two opposing group of muscles. Rhythmic stabilization is very effective technique for strengthening. Stretching technique may be here. A stretch technique basically used to increase the range of motion, relaxation, and inhibition. Contract, relax, hold, relax, slow reversal, hold, relax. These are the stretching techniques. And these are the movement pattern D1, D2, movement pattern of the shoulder and the hip. Shoulder में क्या है, D1 movement pattern, shoulder flexion, adduction, external rotation, flexion, adduction, and external rotation. Tell patient to do like this. D2 में क्या होगा, shoulder flexion, abduction, and external rotation. Then forearm positioning, wrist and finger positioning, flexion pattern and extension pattern. Extension pattern again D1 and D2 extension pattern. इस पैटर्न को आपको बेसिकली याद करना होता है, एंड आई थिंक यू पीपल्स ऑलरेडी अवेयर अबाउट ऑल दिस टेक्निक. This technique was used by Knott and Voss. He basically invented this technique. Again in hip joint, D1 flexion pattern, D2 flexion pattern. D1 flexion pattern is hip flexion, adduction, hip flexion, adduction and external rotation. पेशेंट जब बेड पर लेटता है तो आप इस पैटर्न को बोल सकते हैं. पैटर्न के थ्रू ही कैन अप्रोच हिज लेग टुवर्ड्स द वॉल एंड अगेन ही पुट द leg on the bed. Once patient will learn about all these pattern, he can do this pattern by self. And these patterns are helpful in achieving normal movement pattern.
and for the strengthening of the weaker group of muscles by the facilitation of the strong group of muscles. इसके साथ साथ आपको और knowing the advancement in orthopedic physiotherapy, you should also go through the review of literature. See, the advancement is going, it's a continuous process. And for being and to be aware about the advancement, you'll have to be in regular touch with the recent research activities, and you should also go through the review of literature. And suppose you want to know about the advancement of physiotherapy and rehabilitation in case of the टेनिस एल्बो ट्रीटमेंट में रिसेंट एडवांसमेंट क्या है, तो इसको आप तभी पता लगा पाओगे जब आप रिव्यू लिटरेचर करोगे. वी हैव टू गो थ्रू द रिव्यूइंग ऑफ द फिजियोथेरेपी, रिव्यूइंग ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ टेनिस एल्बो इन द फील्ड ऑफ फिजियोथेरेपी. तो आप जब जाओगे रिव्यू करने के लिए तो डिफरेंट जर्नल्स में डिफरेंट उसके आर्चिव्स को आप सर्च करोगे और देखोगे कि अलग अलग डिकेट्स पे कितने इसमें चेंजेस हुए हैं ट्रीटमेंट पैटर्न में. इस तरह आप कलेक्ट करोगे तो आपके पास एक समरी आ जाएगी. यस, दीज आर द कंक्लूजन ऑफ डिफरेंट स्टडीज, एंड उसी कंक्लूजन के बेस पे आप ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हो, जिसको क्या बोलते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस. तो इसके रिसेंट एडवांसमेंट इन द ट्रीटमेंट इन द फील्ड ऑफ ट्रीटमेंट in the physiotherapy field of treatment, we will have to go through the review of literature. जैसे टेनिस एल्बो में क्या क्या एडवांसमेंट है, किसी को कुछ पता है अभी कौन सा एडवांसमेंट है ट्रीटमेंट का? जैसे टेनिस एल्बो में बेसिकली हम लोग क्या देते हैं, पेशेंट अगर आपके पास आता है टेनिस एल्बो का पेशेंट, तो आप क्या दोगे? सर बेसिक एडवांसमेंट जो टेनिस एल्बो क्या बोलते हैं? lateral epicondylitis. Lateral epicondylitis. Yes. Yes. I think because of the inflammation of the common insertion at the lateral epicondyle of common wrist extensor tendons over the lateral epicondyle of the humerus. Yes, sir. So because of the repeated activities, either play activities or some work-related activities, where the wrist movement are more and more, twisting movements, bending movements, side bending, flexion and extension of the wrist. Because of the repeated movement of the wrist, the insertion muscle tendon inserted over the muscle tendon those arise over the lateral epicondyle get ruptured or strained. They get basically there is a straining over the common insertion point. Common origin point, yes, origin point. तो उससे क्या होता है? When patient do some activities, repeated activities, or there is injury occurs, and again this injury also heals. तो रिपीटेडली क्या होता है? देयर इज हीलिंग एंड अगेन फर्दर इंजरीज ओवर देयर. हीलिंग और रिपेयरिंग, इंजरिंग, ये चलते रहता है कंटिन्यूअस प्रोसेस. रिकरेंट इंजरी होते रहती है और उससे क्या होता है कि उस एरियाज पे एडिशन बनता है, मसल की कंडीशनिंग जो है वो पुअर हो जाती है, पेन होता है और उसके चलते पेशेंट फील डिफिकल्टी इन डूइंग रिस्ट मूवमेंट. रिसेंट स्टडी ये कर रही है कि ये टेंडेनाइटिस नहीं है, बाद में क्या होता है एक तरह का डिजेनरेटिव चेंजेस होने लगते हैं वहाँ पे इंसर्शन एरिया, जहाँ पे ये टेंडन जो है अटैच है, ओरिजिन एरिया है वो अटैच है टेंडन उस पे पेरियोस्टियम ऑफ द लेटरल एपिकोंडाइल, और वो अटैचमेंट एरिया पे ये चेंजेस होने लगते हैं. तो उसका ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं? पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्यूट केस है तो बोलेंगे पहले आप क्रायोथेरेपी यूज करो. सब एक्यूट है तो उस पर हम अल्ट्रासोनिक थेरेपी यूज करते हैं. वी स्टार्ट अल्ट्रासोनिक थेरेपी विद
low grade intensity like 0.18 watt per centimeter or 1 watt per centimeter square intensity or 5 to 10 minutes. And then we provide a stretching of the ECRB muscle, extensor carpi radialis brevis muscles. यही wrist extensors होती है मेनली, और सबसे लंबा मसल यही होती है, और इसी मसल्स में स्टेनर पे इंजरी होती है, इसके स्ट्रेचिंग कराता है. फिर वी प्रोवाइड ट्रांसवर्स फ्रिक्शन मसाज. अगेन वी रिकमेंड strengthening of the wrist extensors. When we recommend hot pack like heat therapy before exercises and cryotherapy after exercises. एक generalized treatment pattern है. लेकिन recent इसमें advancement plus laser therapy we can also use. Modalities we can change. Recent advancement में क्या हुआ है? We use फ्लेक्स बार एक्सेंट्रिक ट्रेनिंग में क्या होता है कि मसल्स जो है कंसेंट्रिक में क्या होता है, मसल्स की लेंथ जो है मसल में शॉर्टनिंग होती है, मसल टेंशन इंक्रीज होता है. एक्सेंट्रिक में क्या होता है, मसल्स की लेंथनिंग, और कंसेंट्रिक में शॉर्टनिंग होती है. बट एक्सेंट्रिक कंट्रैक्शन इज मोर पावरफुल एंड इट हैज गुड रिजल्ट. ये रिसेंट स्टडी कर दी है कि एक्सेंट्रिक कंट्रैक्शन कराना चाहिए इंस्टेड ऑफ द कंसेंट्रिक स्ट्रेंथिंग. एक्सेंट्रिक ट्रेनिंग आप कैसे कराओगे, कैसे रिस्ट एक्सटेंशन और वेट के साथ कराते हो तो बोलते हो कि नीचे ले जाओ ऊपर, वेट सॉरी आप हाथ में क्या दोगे, डंबल दे सकते हो 1/2 kg का, और पेशेंट को बोलोगे रिस्ट को फ्लेक्स और एक्सटेंड करो. एक्सेंट्रिक में क्या होगा कि पेशेंट जो है जब वेट को नीचे की तरफ लाता है तो बोलता है उसको ग्रेजुअली लाओ, धीरे धीरे लाओ. क्या बोलते हैं उसको, ग्रेजुअली लाओ. उससे क्या होगा, एक्सेंट्रिक कंट्रैक्शन होगा. और दूसरा वी कैन रिकमेंड दिस एक्सेंट्रिक कंट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्स बार. फ्लेक्स बार एक सिलिंड्रिकल बार होता है. Is it visible to you? Yes, sir. See, the patient is holding this cylindrical shape rubber material. This is known as flex bar. क्या बोलते हैं इसको, flex bar. पेशेंट इसको होल्ड करता है अफेक्टेड हैंड से, फिर क्या करता है दूसरे हैंड से इसको रोटेट करता है, फिर हैंड को फ्री करके फिर ग्रेजुअली अफेक्टेड हैंड से बोला तो उसको रिलीज करो. उसमें क्या होता है कि इसका रिस्ट जो एक्सटेंडेड पोजीशन में होता है, ग्रेजुअली अदर फ्लेक्स पोजीशन में ग्रेजुअली एक्सटेंड होता है, और उससे क्या होती है कि there is eccentric contraction appears over the extensors, wrist extensors. इसी के साथ आपको और भी कई टेक्निक है. सपोज लो बैक पेन में, लो बैक पेन का ट्रीटमेंट आप लोग क्या देते हो लो बैक पेन में? सर डिपेंड्स कि वो किस तरफ जा रहा है, उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस फर्स्ट. यस, मतलब रूट कॉज ऑफ द पेन बेसिकली. यस सर. हाँ, कई बार लो बैक पेन जनरलाइज मसल वीकनेस से होती है, या कई स्ट्रेन आ गया बैक में,
Sometimes it happens because of disc problem, disc bulging. कई बार क्या होता है, मसल्स की टाइटनेस हो जाती है फेसियाइटिस से. देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन. अब इसके ट्रीटमेंट प्लान भी अलग अलग है. बट रिसेंटली जो है अभी इस डिकेड में जो लो बैक पेन का ट्रीटमेंट प्लान है, उसमें वी यूज लंबर स्टेबलाइजेशन टेक्निक, जिसको बोलते हैं कोर मसल स्ट्रेंथनिंग. क्या बोलते हैं उसको? कोर मसल स्ट्रेंथनिंग. कोर मसल स्ट्रेंथनिंग में हम जो है बेसिकली वी स्ट्रेंथन दी कोर मसल्स. कोर मसल्स में कौन कौन से मसल्स आते हैं? जी जाती abdominals और अभी डायफ्राम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निकल के आ रहा है पिछले 5 साल की diaphragmatic muscles, studies. transverse abdominis muscles, diaphragmatic muscles, and pelvic floor muscles and peripheral muscles. These muscles are essential muscles and these muscles act as a corset. ये muscles क्या करते हैं? lumbar corset की तरह काम करते हैं. These muscles basically create compression over the spine and it provide external support to the spine. And by getting external support over the spine, there is a less chance of the bulging. So that is why we focus on the strengthening of the core muscles, basically external abdominal muscles, diaphragmatic muscles, pelvic muscles, and also spine extensor muscles. और इसके साथ साथ और क्या कराते हैं? We provide muscle stretching exercises. Muscle stretching में those are the multi-joint muscles. Multi-joint muscles, those are associated with the spine and the hip area. We stretch those muscles. जैसे multi-joint muscles कौन कौन से, हिप में कौन कौन से multi-joint muscles हैं? हिप में Sir, muscle joints? quadriceps, No, hip में no. quadriceps, Yes, Rectus quadriceps iliopsoas, concept. rectus femoris, sir. Yes. Basically, iliopsoas. TFL is the multi-joint muscles, TFL. tensor fasciculata. Then hamstring is also multi-joint muscle because hamstring की insertion कहाँ होती है? hamstring muscles की tibia पे होती है. कहाँ पे होती है? और फिर उसके अलावा और कौन कौन सी मसल्स हैं? आपकी Sir, around hip only or yes, around the hip. around the hip. तो उन सारे मसल्स के स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथिंग जरूरी होती है. बिकॉज एक बार जब मसल जो हिप से हिप जॉइंट के मसल्स में अगर कोई पैथोलॉजी होगी तो उसका इफेक्ट जो है स्पाइन पे पड़ता है. सपोज करो कि इलियोसोस की अगर शॉर्टिंग हो गई. इलियोसोस क्या होता है? इलियोसोस आर दी हिप फ्लेक्सस. हिप फ्लेक्सस में शॉर्टिंग होती है तो क्या होता है? लंबर लॉर्डोसिस इंक्रीज हो जाती है. क्या होता है? लंबर लॉर्डोसिस इंक्रीज हो जाती है. अगर आपको साइड पैरास्पाइनल मसल्स जो हैं, क्वाड्रेटस लंबोरम है जो हिप हाइकिंग करती है, इसमें शॉर्टनिंग हो गई तो इट कैन अल्टर द टिल्टिंग ऑफ द पेल्विस. तो जितने मसल्स मल्टी जॉइंट मसल्स है अराउंड द हिप, उसकी भी स्ट्रेचिंग जरूरी होती है. उसके साथ साथ निवर टिश्यू स्ट्रेचिंग, न्यूरल टिश्यू मोबिलाइजेशन टेक्निक, जिसको बटलर टेक्निक बोलते हैं. इसमें चूंकि नर्व इंट्रैपमेंट हो जाता है और बिकॉज ऑफ नर्व इंट्रैपमेंट देयर इज रेडिएटिंग पेन फ्रॉम द लोअर बैक to the gluteal, then again it goes down to the back of thigh, then leg and up to the heel. तो न्यूरल टिश्यू की स्ट्रेचिंग जरूरी होती है करना, जिसमें सियाटिक नर्व की स्ट्रेचिंग. न्यूरल टिश्यू की स्ट्रेचिंग करोगे आप तो क्या होगा? जहाँ पे एडेशन बना होगा, जहाँ पे नर्व्स की ओरिजिन हो रही है, स्पाइन नर्व्स की ओरिजिन, वहाँ पे एडेशन ब्रेक होता है और टिश्यूज पे, न्यूरल टिश्यू पे कंप्रेशन कम हो जाती है. So this technique is also effective. Then again, myofascial release technique is very helpful in case of the fasciitis
and tightness of the muscles, particularly the deep group of muscles. तो deeply placed muscles, जो myofascial release is very effective. myofascial release ये मैनुअली करते हैं आजकल. IASTM टेक्निक भी आती है, इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू IASTM. STM. Yes. Instrument assisted soft tissue manipulation. You can do manually and you can use the IASTM also for the conditioning of the fascia and the muscle, for achieving conditioning of the fascia and muscles. जैसे कई बार क्या होता है सियाटिका जो है बिकॉज ऑफ द पिरिफॉर्मी सिंड्रोम, सुना पिरिफॉर्मी सिंड्रोम? Yes. पिरिफॉर्मी सिंड्रोम उसमें मायोफैसियल रिलीज इज वेरी हेल्पफुल. फाइब्रोफेसियाइटिस हो गया, वहाँ पे हेल्पफुल. लो बैक पेन में इट्स वेरी हेल्पफुल. मैकेंजी टेक्निक अगेन इज पोस्चरल करेक्शन is very essential part, ergonomics part. So all these things are the recent trends of treatment. तो recent trends of treatment के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स. आप जो भी केसेस देखते हो, आपका इंटरेस्ट है उस केस पे, तो उससे रिलेटेड आप लिटरेचर को सर्च करो, आपको रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ ट्रीटमेंट मिल जाएंगे. These are the techniques of the cornosus tensing. By putting the biofeedback sphygmomanometer cuff over the lower back area, and patient has to provide compression over the cuff, inflated cuff in the abdomen and pushing the abdomen downwardly. And gradually patient has to do these exercises and he will have to achieve more and more strength. Exercise techniques and stretching techniques on the joint muscles, dual tissue stretching, artificial release techniques. Skin rolling, floss and technique, longitudinal transverse technique, head stroking, techniques, ergonomics. उसके लिए आपको रिव्यू लिटरेचर करना होगा. इसी तरह joint replacement is also very important part of physiotherapy. फिजियोथेरेपी में चूंकि आपको ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी में TKR THR के पेशेंट देखने होते हैं, TKR THR में भी काफ़ी एडवांसमेंट हो गया है. आजकल रोबोटिक सर्जरी हो रही है और सर्जन भी चाहते हैं कि पेशेंट शुड डिस्चार्ज वेरी अर्ली फ्रॉम द हॉस्पिटल, एंड इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द गुड फिजियोथेरेपी. अगर आप फिजियोथेरेपी टाइम पे दोगे और इफेक्टिव फिजियोथेरेपी दोगे तो फिर पेशेंट विल बी एबल टू डिस्चार्ज वेरी अर्ली. इसके लिए आपको अगेन रिहैबिलिटेशन करना पड़ेगा. टोटल नी रिप्लेसमेंट के केसेस आते हैं कि नहीं आप लोगों को वहाँ पे ओपीडी में? पोस्ट सर्जिकल केसेस आते हैं कि नहीं? सर पोस्ट सर्जिकल में इनिशियल फेजेस में तो उन्होंने आईपीडी में ही लिया हुआ है, लेट स्टेजेस के एक दो केसेस आए हैं. आते हैं, कोई बात नहीं. लेट केसेस भी आते हैं. कई ऐसे केसेस होते हैं जो फिजियोथेरेपी अच्छी नहीं होती, नेगलेक्टेड केसेस होते हैं या इनसफिशिएंट फिजियोथेरेपी उसको मिली होती है. इन दैट केस वी आल्सो लाइक improve the conditions of the patient. Yes sir. जैसे स्टार्टिंग में पोस्ट फ्रैक्चर और मैस्टेक्टमी के बाद ये सब के केसेस तो आ रहे हैं हमारे पास एम्पल नंबर में. सर्जिकल पोस्ट नी फ्रैक्चर कॉम्प्लिकेशंस, रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन एंड ऑल, ये सब तो काफी आ रहे हैं. हाँ, तो ऐसे केसेस में आप अप्लाई कर सकते हो MWM, मोबिलाइजेशन टू मूवमेंट. जैसे सपोज को नी जॉइंट में फ्लेक्शन
रेस्ट्रिक्टेड है, तो वहाँ पे आप टिबियल हेड में पोस्टीरियर ग्लाइड दे करके और मुलिगन बेल्ट के थ्रू आप फ्लेक्शन रेंज बढ़ा सकते हो। अगेन लो वेट सस्टेन स्ट्रेच टेक्निक अप्लाई करके रेंज बढ़ा सकते हो मसल एनर्जी टेक्निक के थ्रू। तो जो भी एडवांसमेंट है बेसिकली वो डिपेंड करता है आपके रिव्यू लिटरेचर, आपके इंटरेस्ट पे। क्योंकि एडवांसमेंट जो है, आज की जो एडवांसमेंट है, कल के लिए वो हिस्ट्री बन जाएगी। तो Yes, sir. इट्स अ continuous process and we'll have to go through the review literature, and you should have to like keep your interest in getting more and more knowledge. Short knee extension exercises for the achievement of the quadriceps leg। बेसिकली इस तरह केस में देखा तो क्वाड्रिसेप्स लेग हो जाती है, क्वाड्रिसेप्स की एक्सटेंशन पूरी नहीं होती है। पेशेंट जो है नी एक्सटेंड तो करता है और फुली नहीं कर पाता है, तो इस तरह के क्वाड्रिसेप्स लेग वाले केसेस को आप बोल्स्टर के थ्रू शॉर्ट नी एक्सटेंशन एक्सरसाइज करा सकते हो, इनिशियली विदाउट वेट, अगेन आफ्टर पुटिंग सम वेट, दैट इज नोन एज प्रोग्रेसिव रेसिस्टेंट एक्सरसाइजेस, जिसमें आप डिलोम्स टेक्निक के थ्रू लो वेट increase repetitions, and again visually you can increase weight also. If you increase the weight, we achieve power. If you will keep constant weight and increase the repetition, you will achieve endurance. Now, any questions? No, sir. I think we have. I tried to cover your syllabus, and the rest part you are wise enough to like complete it. And in future, if you feel any problem, you can also communicate with me through the mail, and you can also talk, isn't it? And then I can also Sure, provide sir. some training to you. Now, there is no any question. No, sir. No, sir. No, sir. चलो ठीक है. Then I think it is the last class. Na? Today is last class. Yes, sir. So I wish you all the best in the future, and start doing your like research, because this is the you are all these classes are the part of coursework, and after completion of the coursework, you go through the one coursework examination, and after passing the examination, you submit your research proposal, and you will start your Yes. study. And I'm extending my best wishes to all of you. May Almighty bless you. Thank you so much, sir. Okay.